Hello viewers, today I am going to discuss thermodynamics, introduction of thermodynamics and work done. First, thermodynamics. This word is made of two words, thermo and dynamics. Thermo means heat change and dynamics in a process. Hence, the part of science which deals with heat change or change in energy in a process. Some terms, terminology पढ़ रहे हैं. सिस्टम एंड सराउंडिंग. पूरे यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग. द पार्ट ऑफ यूनिवर्स under observation, under investigation, on which theoretical or experimental studies being performed is called system. And the rest part of universe might be in a position to exchange matter and energy with surrounding. This system is called surrounding. Might be मतलब may or may not. Types of system. Open system. A system which can exchange both matter and energy with surroundings is called open system. Just like water placed in an open beaker, if it is heated, energy flow from surrounding to system and matter in form of water vapor escapes from system to surrounding. Closed system. The system which can exchange energy with surrounding but exchange of matter is restricted is called closed system. Just water in a closed vessel, it can be heated or cooled, but total amount of matter in the system remains constant. Isolated system. The system which cannot exchange matter and energy with surroundings is called isolated system. If a closed system is perfectly insulated, it becomes isolated system. Properties of system. Microscopic properties of system. Microscopic properties of system arising due to single atom or molecule. Just like atomic mass, molecular mass, dipole moment, chemical reactivity. Macroscopic property. Macroscopic property of system arising due to bulk of substance in the system. It may be of two types, intensive property and extensive property. Intensive property. The macroscopic property of the system independent of amount of matter in the system. It's called intensive property. It depends on the nature of matter in the system. Intensive property remains unchanged on addition or removal of matter from the system. It may be temperature, pressure, density, surface tension, viscosity, specific heat capacity, melting point, boiling point, vapor pressure, electrode potential, any of the. Extensive property. The property of system is depends on amount of matter in the system. It's called extensive property. It is mass, volume, heat capacity, internal energy, enthalpy, entropy and free energy. ये सारे एनर्जी टर्म जो है इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल. The fundamental properties which determine the state of system are called the state variables or state function or thermodynamic parameters. The state variables that are commonly used to describe the state of system are pressure, volume, temperature, internal energy, enthalpy, entropy, free energy and number of moles. The value of a state variables depends on initial and final state of the system and independent of path of change in the state. So these are also called a state function. Now thermodynamic process. The operation or series of operations made on the system in order to change from one state to another state is called thermodynamic process. It may be of following types: isothermal process occurring at constant temperature or delta T 0. Isobaric process occurring at constant pressure or delta T 0. Isochoric process occurring at constant volume or delta V 0. Adiabatic process
occurring without loss or gain of heat or Q equal to 0. Cyclic process. Cyclic process may be in two or more steps. The process which initial and initial state of the system regains after a series of operations. जैसे A से B, B से C, again C से D. It is called cyclic process. And delta P for cyclic process, delta P equal to 0, delta V equal to 0, delta P equal to 0, because initial state is regained. Now reversible and irreversible process. इसको समझें थोड़ा सा. Two types of force are acting simultaneously in a process: driving force and opposing force. जिस फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा, दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा, दैट इज कॉल्ड अपोजिंग फोर्स. For a process to occur, driving force is greater than opposing force. So when driving force is slightly greater than opposing force, or opposing force is slightly less than driving force, the process occurs as small steps and can be reversed at any stage. It's called reversible process. In reversible process, system is always in equilibrium with surroundings. हर एक small step के बाद equilibrium achieve होगा. इसको आप ग्राफ से समझ रहे हैं. अच्छा, ये जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, P1 V1, P2 V2, जैसे प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम धीरे बढ़ रहा है, हर एक स्टेप. इस तरह एक हाइपरबोलिक ग्राफ है. ये रिवर्सिबल प्रोसेस का होगा. और when driving force is very much greater than opposing force, the process occurs as sudden change or fastly and cannot be reversed by a small change in variables. It's called irreversible process. In this process, equilibrium exists only initial and final state of system. जैसे a gas का volume V1 at high pressure, it is allowed to extend at pressure P external, V1 to V initial to V final. इसको एक कॉमन एग्जांपल से आप समझ सकते हो. आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, यूजिंग सीढ़ी से नीचे आ रहे हो, तो आपका हाइट हर एक स्टेप के साथ घट रहा है, स्मॉल स्टेप्स में घट रहा है. एंड इन एनी स्टेज आप नीचे जाने के बजाय ऊपर चढ़ सकते हो. दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल. और कोई छत पर से कूद जाता है, कूद जाने के बाद वो ग्राउंड लेवल पर ही पहुंचेगा, बीच में रिवर्सल पॉसिबल नहीं है. दिस इज कॉल्ड इररिवर्सिबल. Now sign convention. Very simple. Any change resulting decrease in macroscopic property of system has negative sign or increase positive sign. Heat absorbed by the system plus Q, released minus Q. Work done on the system. So system की एनर्जी बढ़ेगी और by the system की एनर्जी घटेगी minus एनर्जी. It is just reverse to a convention of physics. Now pressure volume type work. Any work is equal to force into displacement. It is opposing force into displacement. So a cylinder fitted with weightless and frequency piston, opposing force P external है, गैस एक्सटेंड हो रहा है इसका सिस्टम, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, L डिस्टेंस मूव किया है. So work done by the system minus the opposing force into displacement, opposing force हुआ P external into pressure into area A और into displacement L. So A into L is equal to dV, change in volume, P delta V, और P delta V equal to delta V equal to final minus initial. So minus W equal to P external into delta V. If work done in isobaric process,
फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल को V2 ले रहे हैं, इनिशियल को V1 ले रहे हैं। अब Pg इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से V2 इक्वल टू एनआरटी बाई पी, तो N2 RT2 बाई पी, N1 RT1 बाई पी। फॉर a definite amount of gas at constant temperature, मतलब P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P and N1 equal to N2 equal to N. Then formula becomes minus P external nRT P2 1 by P2 minus 1 by P1. For definite amount of gas at constant pressure, N1 equal to N2 equal to N and P1 equal to P2 equal to P external. Now formula becomes W equal to minus nR P2 minus P1. At constant pressure and temperature, P1 equal to P2 equal to P external and P1 equal to P. तो W इक्वल टू माइनस N2 माइनस N1 RT और माइनस डेल्टा NRT। एक रिलेशन है, अगर लीटर एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101.325 जूल। कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल। वर्क डन व्हेन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड 5 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। फार्मूला आ रहा है P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हुआ, V2 10 लीटर और V1 5 लीटर। जो माइनस 5 लीटर एटमॉस्फेयर जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.325 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2.8 ग्राम N2 gas at 300 Kelvin and 2 atmosphere is allowed to expand isothermally against constant external pressure of 1 atmosphere until pressure gas becomes 1. तो यहाँ आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है, तो फार्मूला बिकम्स पीछे डिराइव किए हैं। तो P एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेयर, मोल ऑफ नाइट्रोजन 2.8 by 28, R का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 300 केल्विन, P1 by 1, P1 है P2 है 1 एटमॉस्फेयर और P2 है 20 एटमॉस्फेयर। ये वैल्यू आपको लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.325 से मल्टीप्लाई किया है। कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज हीटेड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 0 to 100 डिग्री। दैट कांस्टेंट अमाउंट सेम है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो माइनस nRT2 माइनस P1 सीधे कर दिया है। One more example. 5.6 gram iron is dissolved in dilute at 327 degrees C. Calculate work done. If reaction is occurring in closed vessel at constant volume or reaction cannot be open beaker. तो पहले देखिए आप, Fe solid plus 2HCl aqueous with FeCl2 aqueous and H2 gas। 1 मोल आयरन से 1 मोल H2 गैस मिल रहा है, तो 5.6 ग्राम आयरन मतलब 0.1 मोल से 0.1 मोल H2 मिलेगा। ये रिएक्शन है। If reaction is occurring in a closed vessel of constant volume or isotonic process, delta V equal to 0, then W equal to 0. Next, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओपन बीकर मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो फार्मूला माइनस डेल्टा जी RT। तो डेल्टा NG हुआ मतलब सिर्फ गैसियस कंसीडर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का 0.1 है, बाकी तो सब यहाँ लिक्विड सॉल्यूशन में है और मैं इसलिए उनका कंसीडर नहीं। तो डेल्टा NG 1 हो गया, तो 0.1 R 8.314 और टेम्परेचर T 300 केल्विन। ना आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस अभी बताया था आपको कि अपोजिंग फोर्स P एक्सटर्नली स्लाइटली लेस देन प्रेशर ऑफ द गैस P माइनस BP। P एक्सटर्नल की जगह P माइनस BP ले रहे हैं, तो W इक्वल टू माइनस P माइनस BP इंटू DV ले रहे हैं, तो माइनस PDV माइनस BP इंटू DV। दिस टू टर्म
Product of two very small quantity becomes negligible. So this is negligible. So W equal to माइनस पी डी भी लिया जा रहा है और पी की जगह माइनस एन आर टी डी जी वाई भी लिया जा रहा है। यहाँ तक आए हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बिटवीन टू लिमिट V1 to V2, तो W becomes minus nRT ln V2 by V1 और 2.303 log V2 by V1 और according to Boyle's law P1 V1 equal to P2 V2, so V2 by V1 equal to P1 by P2. Calculate work done when 1 mole of an ideal gas is allowed to expand 5 liter to till reversibly and isothermally. यही फार्मूला है। एन हुआ 1, R 8.314 ले रहे हैं, टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं और V2 V1 सेम यूनिट में लीजिए, किसी भी लीजिए उसका यूनिट कैंसिल हो रहा है, इसलिए लीटर में ले रहे हैं 10/5। At a certain temperature, ideal gas occupies 5 liter volume at 2 atmosphere. Calculate work done which is allowed to expand isothermally and reversibly until volume becomes 10 liter. अब nRT नंबर ऑफ मोल या टेम्परेचर नहीं रहता, nRT इक्वल टू पीवी होता है, तो P1 V1 लिया गया है। P1 V1 5 एटमॉस्फेयर एंड 2 लीटर 10.5, तो ये लीटर एटमॉस्फेयर में वैल्यू आएगा क्योंकि यहाँ पीवी लिया आपने एटमॉस्फेयर और लीटर में। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.55 मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू expand 20 atmosphere to 1 atmosphere reversibly and isothermally. P1 by P2 लग रहा है। A very important work done in reversible and irreversible process. The first same change in state अगर है, same change in state देखिए P1 से P2, change in volume V1 से V2, ये रिवर्सिबल मैनर में है और ये रिवर्सिबल मैनर में वॉल्यूम V1 से V2 आ रहा है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर P2। तो वर्क डन इज एरिया अंडर द ग्राफ। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पूरा एरिया अंडर द ग्राफ हो जाएगा, जबकि रिवर्सिबल के लिए ये एरिया होगा, इसलिए W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन इररिवर्सिबल। इसको थ्योरेटिकली आप समझ रहे हो। वर्क डन इक्वल टू opposing force into displacement. In case of reversible process, opposing force is slightly less than driving force, मतलब opposing force has maximum possible value. So work done in reversible process is maximum. Now work done in cyclic process. ये फिजिक्स की चीज है, यहाँ से हम लोग सिर्फ प्रीलिमिनरी आइडिया देते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ साइकिल। If cycle is completed in clockwise, work done by the system and less than 0 and vice versa. A से B, B से C, C से D आ रहा है। तो एरिया अंडर द ग्राफ के लिए यहाँ से P और यहाँ से V ले रहे हैं, तो 2P माइनस P हुआ और 2V माइनस V माइनस P। पाई आर स्क्वायर क्लॉकवाइज है, एक आर का कोऑर्डिनेट हुआ V2 माइनस V1 बाई 2 और दूसरा आर का कोऑर्डिनेट हुआ P2 माइनस P1 बाई 2। इसमें पूरा साइकिल मेथड। ए से बी आइसोकोरिक है, W0 हो गया। बी से सी आइसोथर्मल रिवर्सिबल है और सी से ए आइसोबारिक। WAB 0, WBC isothermal reversible or WAC isobaric. Thank you. Again, subscribe my channel, press the bell icon.